Welcome back, guys. Now we will actually go towards the learning the NumPy. First thing first, you whatever you can say IDE or platform you are using, whether आप Jupyter notebook use कर रहे हैं, VS Code use कर रहे हैं, I am using actually PyCharm. तो उस पे आपको इसको इंस्टॉल करना है. सो इंस्टॉलेशन के लिए you can follow other videos that I have, or just go for the relevant platforms tutorials. So I have already installed the NumPy in my PyCharm. So अब हम क्या करेंगे कि अब इसको हम use करेंगे. So in order to do that, we first have to import that. So उसके लिए जैसे कि आपको पता है कि हम use करते हैं import का function, import NumPy एज एनपी. ओके, ये एनपी जो है ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है फॉर एलियसिंग नमपाई एरेज. जब भी नमपाई को आप इंपोर्ट करते हैं अपनी लाइब्रेरी में तो पीपल नॉर्मली यूज इट. ये अनडिक्लेयर्ड किस्म का, जैसे कहते हैं ना, एक रूल ऑफ थंब समझ आता है कि जहां पे आपको एनपी नजर आएगा वो इसका मतलब है एक नमपाई एरे है. सो ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया अपने जो ना स्क्रिप्ट में. अब हम इसकी कैपेबिलिटीज को यूज कर सकते हैं. सो नमपाई में अगर आपने अरे क्रिएट करनी है तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आप np डॉट अरे का फंक्शन है. सो यू कैन सी दैट अरे फंक्शन. सो अरे के फंक्शन में एज यू कैन सी के नाउ वी हैव टू गिव सम डाटा. और इस डाटा को आप जो है डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक यहाँ पे देता हूँ. सो लेट्स गिव इट फॉर एग्जांपल 3, 7 and 5. सो ये हमने इसमें डाटा दे दिया है. इसको अगर स्टोर करवाना चाहते हैं एक सेपरेट इसको वेरिएबल में तो आप करवा सकते हैं. जिस फॉर एग्जांपल माई इज जस्ट वेरिएबल का नाम लिखा है, उसमें ये अब स्टोर हो गई है अरे. और अब मैं इसको अगर आप देखें तो आई विल जस्ट प्रिंट माई. सो इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं. सो यू कैन सी माई अरे हैज बीन क्रिएटेड. और जैसे कि आपको पता है कि हम कोई भी अरे जब करते हैं स्टोर तो उसकी शेप, डाटा टाइप और वो सब फंक्शनैलिटीज हम इसकी देख सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट अरे वी हैव क्रिएटेड फॉर एग्जाम्पल. और इसकी अगर मैं शेप देखना चाहता हूँ, शेप से मतलब इसमें, क्योंकि ये एक इसकी डायमेंशन समझ लें. डायमेंशन इसमें एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. वो विल कम टूवर्ड्स दैट. बट शेप की भी बात करते हैं तो इसका मतलब है रोज एंड कॉलम्स इसमें कितने हैं. सो वी कैन डू दैट बाय सेइंग शेप. तो ये देखें, इसमें बेसिकली वो आपको बता रहा है कि ये इसकी शेप है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये एक वन डायमेंशनल जो एरे है. इसमें मजीद डायमेंशंस नहीं है. सो इट इज ओनली गिविंग अस वन एस्पेक्ट, और यू कैन से वन डायमेंशनल एरे. But actually we can actually you can say generate more shapes, more dimensions. For example, let's say कि हम इसमें करना चाहते हैं मजीद एडिशन. So let's add into this. तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ. Let's just execute this. Oops. So basically we are missing a bracket here. So now you can see that the shape is clearly defined now. So NumPy array में ये चीजें कैसे arrange होती हैं? For that I would like to show you this particular picture. As you can see,
कि ये एक आपके पास अरे में डाटा अरेंज है एंड इसमें हर चीज़ को बेसिकली हम एक्सेस कहते हैं, लेकिन जैसे कि ये फर्स्ट एक रो है, दिस इज़ वन एक्सेस, देन दिस इज़ अदर एक्सेस, और इस तरह ये आपको ये डायमेंशंस भी बता रहा है। अगर हम इसमें एक और ऐसा ही पूरा ब्लॉक क्रिएट करके इसमें रख दें, तो दैट इज़ अनदर एक्सेस। सो इसकी अभी शेप अगर आपको नजर आ रही है, तो 3 आपके पास रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, और जैसा कि आपको यहाँ पे आ रहा है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स की हमारे पास जो एग्जांपल में हमने कोड की है वहाँ पे है, और इसकी नंबर ऑफ डायमेंशन अगर आप करनी है तो एनडेम के नाम से आपके पास फंक्शन मौजूद है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ डायमेंशंस यहाँ पे आ गई हैं, एंड आई कैन इजीली सी कि यहाँ पे 2 डायमेंशंस मेरे पास मौजूद हैं उस फिगर के मुताबिक भी। So this is for the startup, and next you can go to the next part of the tutorial, which you can find in the playlist.